This is episode 583 and a very special coverage on the 24th of October 2022. At 31 for 4, their chances were almost zero. The main batters were gone and they were chasing a stiff target of over 160 runs, and the ghost of the loss of 2021 was still looming in their heads. But arrived two combustible elements, two nuclear explosions, who, if came together, would be as unstable as uranium 238. And then, when they joined forces, they did something which no one expected. They took the match to the last over, which has been the formula and the brand which the team has followed. And it was just the magnitude of the stage which gave them that impetus. Would they have done the same thing in any other match? One doesn't know. Let's ask our special guest Archit, what did you think of the match from the beginning till the end? मैं तो यही सोच रहा था कि मैच हार सकते हैं, पर बहुत अच्छा खेले विराट कोहली। मुझे तो अच्छा लगा। मतलब शुरू के अंदर लगा था कि मतलब जब 31/4 थे जैसे आपने बताया, तो उसके बाद तो मतलब मैंने तो बंद कर दिया था मैच। तो बाद में फिर से मैंने देखा, तो मतलब ठीक-ठाक चल रहे थे हार्दिक पांड्या और विराट कोहली, मतलब पार्टनरशिप बना रहे थे शुरू में तो। फिर उसके बाद पता नहीं, शायद 12th ओवर कौन सा शाहीन का एक ओवर था, उसके अंदर विराट कोहली ने पूरे अपने शॉट्स लगा दिए, तो फिर उसके बाद मैच बन गया था। चलो, इंटरेस्टिंग बात है, बट जैसा आपने कहा 31 फॉर 4 पे मैच काम से गया था, बट हाँ आपको जी। कहीं लगा था कि जब दो कंबस्टेबल एलिमेंट्स साथ में आए, कोहली और पांड्या, देयर वाज स्टिल अ चांस वो कुछ कर सकते थे? नहीं, जैसे शुरू के अंदर तो बहुत ज़्यादा मतलब वो तो बचा रहे थे विकेट। जैसे मैंने देखा कि हार्दिक पांड्या तो मतलब शुरू के अंदर स्ट्राइक रेट दोनों की मतलब 100 के करीब थी। मतलब वो तो अभी इनिंग्स को स्टेबलाइज़ कर रहे थे। अभी जो आपने बताया कंबस्टिबल वाला तो बाद में शुरू हुआ था, अभी तो स्टेबलाइज़ कर रहे थे इनिंग्स। तो मतलब उसके अंदर जैसे 10 ओवर में मतलब इनको कितने चाहिए थे? 80-90 रन चाहिए थे शायद। आई तो थिंक ओवर 120 रन्स इन द लास्ट 10 ओवर्स। हाँ, तो मतलब वो तो 120 रन्स अगर चाहिए थे तो मतलब बहुत मुश्किल था। जैसे और पाकिस्तान की बॉलिंग तो बहुत अच्छी थी कल। तो अब ये है कि नेक्स्ट मैच नेदरलैंड्स के साथ है, और हुँ, अब पाकिस्तान इज अंडर प्रेशर बिकॉज लाइक लास्ट ईयर दे हैव लॉस्ट द फर्स्ट मैच ऑफ द ग्रुप स्टेज, नाउ दे हैव हुँ, टू विन द नेक्स्ट फोर। इंडिया को हुँ, सिर्फ दो मैच और जीतने हैं एंड देयर इन द सेमीफाइनल्स, बट दे हुँ। हैव tough teams like South Africa. Bangladesh can also be a tough team. Zimbabwe and Netherlands can surprise you. So आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में what's the best approach? I mean, क्या करना चाहिए? How do we deal with it? Can we afford to be 30 for 4 again? This time भी हम बच पाए, बट क्या हम हर बार 30 for 4 हो सकते हैं? नहीं, नहीं। बैटिंग ऑर्डर गलत था या कुछ और प्रॉब्लम्स थी? इज इट दैट द ओपनर्स स्ट्रगल विद द स्विंग एंड द सीम? आपके हिसाब से क्या है? बिकॉज मेरे हिसाब से वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी 30 फॉर 4 अगेन एवर। इस बार बच गए, इमोशंस थे, एड्रेनलिन था, मे बी द ऑपोजिशन वाज सच दैट थिंग्स वर मैनेज्ड, बट आई डोंट थिंक इट्स प्रैक्टिकल दैट एवरी टाइम दिस विल हैपन, बिकॉज नहीं, ये मैच इतनी एनर्जी ले जाएगा ना इनसे, कि अगला मैच कब है? 27th को है, नेदरलैंड्स के साथ है, ऑन अ डिफरेंट ग्राउंड आई सपोज, एडिलेड, सिडनी नेक्स्ट मैच इज इन सिडनी। डू यू थिंक this obsession to bowl first should go away? It doesn't work always. Can they bat first? Can they defend? Can the captain and the coach trust their bowlers that we will get to 150 and now you defend? Because if you look at it, अगर आप 2007 का पूरा देखो, इंडिया ने हमेशा पहले बैटिंग करी है और सारे मैचेस जीते हैं। तो डू यू आपके हिसाब से should we abandon this flawed theory at least of bowling first? It doesn't work. It worked yesterday, but it may not work always. बताओ। मतलब
ऐसे चेज़ करने का तो मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि हर बार ऐसे फ़ॉर्मूला क्यों बनाया हुआ है कि आपको चेज़ करना है हमेशा, पहले आप बैटिंग कर सकते हो। पर मतलब इसके अंदर यही है कि आजकल टीम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं चेज़िंग के इसके अंदर, मतलब आप चाहे 200 भी कर लो तो मतलब मैच क्लोज़ लेके चली जाती हैं टीम्स। तो मतलब और हमारी बॉलिंग के अंदर भी अभी जैसे शम्मी का देखा हमने कि मतलब पहला ओवर के अंदर 2 लूज़ बॉल्स थी, मतलब ऐसे-ऐसे हो जाता है। बॉलिंग हमारी अभी इतनी ज़्यादा, जैसे शम्मी को तो 1 साल बाद आए वो शायद टी20 इंटरनेशनल में। तो मतलब मेरे हिसाब से तो पहले आप चेज़ ही कर लो। पहले बॉलिंग कर लो आप, चेज़ तो बैट्समैन कर देंगे। इस बार ओपनर्स ने कर दिया कि नहीं चले, पर हर बार मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होएगा। तो नेक्स्ट मैच सेम फॉर्मूला, बोल फर्स्ट। मैं मेरे हिसाब से तो चेज़ करना बेटर है, चाहे मेरे को ये फ़ॉर्मूला ठीक लगता नहीं, पर मतलब इस टूर्नामेंट के लिए तो आप चेंज ना करो बीच के अंदर, मेरे हिसाब से तो। और आपके हिसाब से टीम चेंजेस होने चाहिए, कौन किसको आना चाहिए? पंत टीम कैट चेंज सकता है? पंत मतलब अभी तक इस मैच के तो टीम ठीक थी, मतलब अक्षर पटेल भी अक्षर पटेल की बॉलिंग के अंदर थोड़ा हो गया और उन्होंने बैटिंग के अंदर भी नहीं कुछ किया। पर वो भी कंट्रोवर्शियल ही था जब उनका रन आउट था, तो इस अगले मैच के लिए तो मैं सेम टीम रखूंगा मतलब। कंट्रोवर्सी की बात करते हैं, सबने वो नो बॉल देखी, आपके हिसाब से वो नो बॉल थी लास्ट ओवर? मेरे हिसाब से तो नहीं थी नो बॉल। स्टेप आगे था, बॉल डिप कर रही थी, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं थी नो बॉल। बट इन सिचुएशंस में आपको लक चाहिए, एंड आई थिंक लक वाज विद कोहली थ्रू आउट द मैच। द टेनिस शॉट ऑफ हैरिस रॉफ, द शॉट ओवर फाइन लेग ऑफ हैरिस रॉफ, it was all हम्म। luck. He could have gone to the fielder and match could have been over, but there's अब उस बारे में बात करने का फायदा नहीं है कि फील्डर के पास जाती है क्या नहीं जाती। अब हाँ नेक्स्ट हाँ। अब नेक्स्ट दो टीम डिस्कस करते हैं जो ऑपोजिशंस आने वाली है, नेदरलैंड्स, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे। हम्म। व्हाट कैन बी डन? लेट्स से नेक्स्ट मैच में वन ऑफ दीज टीम्स हम्म। wins the toss and asks India to bat. So ठीक। how what should be an average score? Because मेरे हिसाब से average score, a good average score would be anywhere between 150 and 160. What is your thing? मतलब मैं तो एग्री करता हूँ आपकी बात से, 160 170 फाइन है ऑस्ट्रेलिया के पिचेस के हिसाब से तो, और ग्राउंड के हिसाब से। Because हर बार कोहली जैसा बंदा तो आएगा नहीं। अब हम्म। दूसरे मैचेस की भी बात करते हैं, जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का हुआ। हम्म। उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी, दे बैटेड फर्स्ट एंड हम्म। न्यूजीलैंड में 200 and Australia could हम्म। not even chase, and the हाँ। controversy was उन्होंने स्टीव स्मिथ को नहीं खिलाया, एंड दे गॉट हम्म। कैरिड अवे बाय टिम डेविड एंड ग्लेन मैक्सवेल एंड ऑल हम्म। दीज पीपल। सो डू यू थिंक Australia made an error by not playing Steve Smith? Because Steve Smith can easily do what Virat Kohli does. मतलब they are very similar players in terms of their attitude and the way they do it. So do you think Steve Smith should have played in the first match, considering they were chasing 200 and even their openers, Finch, is not exactly contributing in the manner हम्म। in which he should be, because he's almost 36. और हमने ये हम्म। टर्म सुना है रॉन्ग साइड ऑफ 30, डैड्स आर्मी, एंड हम्म। कैसे कैसे मतलब टर्म्स आ रहे हैं. So in that match, do you think Smith could have played maybe in Smith could have played in place of, let's say, Tim David टीम or डेविड। Maxwell? हम्म। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रॉब्लम ये है और पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके पास बैकअप कीपर नहीं है. हम्म। जॉश इंग्लिश वाज इंजर्ड. आई डोंट हम्म। इवन नो हाउ ही वाज इंजर्ड. मेरे को तो समझ ही नहीं आया जब उसने कहा कि गोल्फ बैट टूट गया. मैंने कहा ये हो कैसे सकता है? आई मीन अजीब अजीब चीजें हो रही हैं. जॉनी बेट्स तो इंजर हो गया था बिकॉज उसने गोल्फ स्विंग किया और उसकी बैक हर्ट हो गई. हम्म। तो स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग. अब ये है कि नाउ England has won their first match, India has won their first match, New Zealand has won their first match, Sri Lanka has won their first match. Let's say South Africa wins today and Bangladesh wins today. That means there's pressure on Pakistan and Australia to win their next matches, because then that will be a crowded
think. So, who do you think are going to be the four semi-finalists? Let's not talk about finalists. Just give me an हम्म unbiased view, considering the last 8 years of last 8 editions, how the thing has gone that no team has defended exactly two in a row, and no home team has won it. There is no home supremacy when it comes to 20 over World Cups. So हम्म Australia is following that trend. They lost the first match, and they have very tough opposition in England. They have a tough opposition. England will be a tough opposition. Afghanistan can be a tough opposition. But I know it's still a long way to go. Semi-final is still a couple of weeks away, and the way this tournament is scheduled, अगर आपने schedule देखा है, एक ही दिन में दो दो मैचेस हैं. कुछ कुछ दिन तो एक दिन में तीन तीन मैचेस शेड्यूल करें. दे फॉलोइंग सम फुटबॉल हॉकी ट्रेंड की दे कैन हैव 3 मैचेस बिकॉज मैचेस फिनिश इन 3 hours. But who do you think are going to be the four finalists, four semi-finalists? Just give an unbiased view and just let us know why each team deserves to be in the semi-final. So just take us through your four semi-finalists. तो मतलब ऐसे होएगा, इंडिया तो है ही, मतलब मेरे हिसाब से तो पहुंच जानी चाहिए। और बाकी मतलब ऐसे T20 में प्रिडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, जैसे आपको पता ही है वेस्ट इंडीज बाहर होगी, तो मतलब ऐसे मैं प्रिडिक्ट तो पता नहीं नेदरलैंड्स पे पहुंचे, ऐसे तो कोई भी पहुंच सकता है, तो किस्मत की बात है कि चेज हो रहे हैं, या फिर मतलब ऐसे डेफिनेट व्यू देना कि ये 4 टीम्स पहुंचेंगी, पर फिर भी इंडिया और न्यूजीलैंड और हम्म, पता नहीं, यही तो मेरे को लग रहे हैं अभी तक तो पक्के ओके, तो। इंडिया न्यूजीलैंड के साथ, अभी इंडिया न्यूजीलैंड के साथ रहते हैं. मैं भी अभी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा कौन होगा. तो हाँ, मेरे हिसाब से मैं फाइनलिस्ट प्रिडिक्ट कर सकता हूँ. यू आर राइट, मुश्किल है, कुछ नहीं कह सकते. नहीं कह सकते। सरप्राइज एलिमेंट्स आर अराउंड द कॉर्नर. वी सॉ नामीबिया बीट Sri हम्म Lanka in the qualifiers. We have seen West Indies being knocked out, and हम्म West Indies didn't have Russell or Narayan because whatever their uh, debate, whatever their relationship with their board. Okay, so let's discuss India versus Netherlands. What हम्म can they do to avoid a team like Netherlands who can surprise you? Because Netherlands has done well so far. They have nothing to lose. Netherlands is like India in football. They don't हम्म play regularly. They're very lucky to play qualifiers and the World Cup. India don't even get to play qualifiers and a World Cup in football. And most of their players are not professional cricketers. They are just group of people who come together, who play, and when the tournament finishes, they go home and they resume their daily activities. So for हम्म a team like Netherlands, Ireland, they have nothing to lose. So what can we do to avoid those moments, those situations? Because मुझे याद है 2003 वर्ल्ड कप में नेदरलैंड ने इंडिया को 200 पे आउट कर दिया था. शायद आपको याद नहीं होगा, बट क्योंकि वो नेदरलैंड्स थी, हमने उनको हरा दिया था. और हम्म ये भी याद करो 2003 वर्ल्ड कप में वी रीच द फाइनल डिस्पाइट लूजिंग टू ऑस्ट्रेलिया इन द ग्रुप स्टेज. If you remember that, or you can look in the archives. So you never know. Australia may have lost to New Zealand, but they can win the last 4 matches and still qualify. So anything is possible in this World Cup. India may win the first match. They may, because you need to win at least 4 out of 5 matches to have 3 out of 5 matches to have any chance of qualifying. And of course, मेरे हिसाब से net run rate will make a huge difference. Net हम्म run rate will be a big thing. अब इंडिया ने लास्ट उसमें जीता, लास्ट ओवर में नेट रन रेट का फर्क पड़ेगा. हम्म ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट 90 रन से हारी है, नेट रन रेट का फर्क पड़ेगा. हम्म फिर इंग्लैंड ने भी आई थिंक 100 समथिंग चेज करते हुए 19th ओवर तक खींचा, उनका भी नेट रन रेट का फर्क पड़ेगा. तो इफ आई हैव टू गो, आई मे प्रेडिक्ट अ 2007 finalist like situation. India, Australia, New Zealand, Pakistan. I'm looking at that. अच्छा अगर आप 2007 वर्ल्ड कप को देखो, वो वर्ल्ड हम्म कप ही अलग था. आपका ग्रुप स्टेज था, फिर आपका हाँ सुपर 8 था, देन यू हम्म हैड
semi-finals, then you had finals. So teams had chances, हम्म and then nobody knew what was 2000, what was 2020 15 years ago. हाँ But do जी you think हमने 2020 को कुछ ज्यादा ही importance दे दी? I mean, too much debate about हम्म matchups and a separate format and things like left-arm spinner can't bowl to a right-handed batter or leg spinner can't bowl to left-handed batter. हम ऐसे अजीब अजीब permutation combinations आ गए हैं. I mean, don't you think 2020 should be simple? Hit the ball. All this chasing and all this template setting. Because I think when Rohit Sharma talks about template setting कि हम aggressive brand खेलेंगे तो क्या 15 साल पहले aggressive brand नहीं खेल रहे थे? 15 साल पहले हमने 220 नहीं बनाए थे. 20 ओवर्स का मतलब ही है aggressive रहना. तो हम्म आपके साथ जब ये लोग बोलते हैं aggressive brand, do you think they're just saying it for sake of saying, or do you think they're trying to add some new element to it? मुझे तो लग रहा है पावर प्ले का अच्छा यूटिलाइजेशन को शायद कह रहे हैं ये जैसे पावर प्ले के अंदर 2 फील्डर बाहर हैं, नई बॉल है वो ठीक है पर हम जैसे आईपीएल के अंदर भी यूज़ किया था सुनील नारायण को केकेआर ने पावर प्ले के अंदर हिटिंग करने के लिए और मतलब काफ़ी हद तक वो सही भी था। तो मतलब अगर कोई ऐसा पिंच हिटर टाइप बैट्समैन अगर मिल जाता है, वो होएगा शायद या जैसे रोहित शर्मा की अभी अप्रोच देख लो, वो भी पावर प्ले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद उसको एग्रेसिव ब्रांड कहा जा सकता है मतलब मेरे हिसाब से। अब मैं नेक्स्ट मैच के लिए कुछ ऐसे सजेस्ट करने जा रहा हूँ जो शायद आपको लगे कि शायद काम ना करे. मेरे हिसाब से नेक्स्ट मैच रोहित एंड कोहली ओपन, स्काई एट नंबर 3, ठीक है, हुँ, एंड देन दे गेट ऋषभ पंत एट नंबर 4 एंड देन दे कैन कीप द सेम टीम. सो दे हैव दैट एक्स्ट्रा बैटर एंड Rahul may be the vice captain, but I still think they can give Rahul a break. Or what can they do? Something like this: give both Rahul and Rohit a break, make Pant the captain for the next match, have Pant and Kohli open. What do you think? And रोहित then को get in Deepak Huda. Get Deepak Huda and Pant instead of Rahul and Rohit in the next match. Make open with Kohli and Pant. Do you think it works? काफ़ी बोल्ड आइडिया दे रहे हो आप, इतनी बोल्ड प्रोपोज़िशन तो मुझे नहीं पता कि करेंगे ये लोग। मतलब वर्ल्ड कप के अंदर तो एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। तो मतलब आइडिया है, बाद में क्या पता वर्ल्ड कप के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। पर मतलब मेरे हिसाब से तो अभी सेम टीम रहेगी इस मैच। मतलब अक्षर पटेल हो सकते हैं ड्रॉप डिपेंडिंग कि Maybe Akshay Patel की जगह दीपक हुडा, हाँ, वो हो सकता है। है ना? मतलब बैट्समैन और मतलब ऑल-राउंडर ये All-rounder. गुड है। Deepak Huda can give you that batting and he can give you हुँ, 2-3 overs, that buffer. हुँ, And हुँ। but do you think Pandey should have been a player of the match because 40 runs, 3 wickets? नहीं, विराट कोहली स्पेशल इनिंग्स थी मतलब वो अगर मैन ऑफ द What मैच was नहीं डिज़र्व special? करती But तो Pandya was the one जिसने वो बीच के ओवरों में या whatever middle overs में he basically got 2 or 3 batters out, their all-rounders out, which हुँ, maybe they could have scored 20 extra runs. He stopped those 20 extra runs. He was in वो that all-rounder category. हाँ, मतलब फैंटेसी पॉइंट्स तो आप देख लो तो सबसे ज़्यादा हार्दिक पांड्या के ही थे। पर मतलब Fantasy points don't matter, na. Player of the मतलब match matters. ले मतलब वैसे अगर आप ऑब्जेक्टिवली उनकी परफॉर्मेंस को जैसे उनका एक फॉर्मूला है फैंटेसी पॉइंट्स का, तो ऑब्जेक्टिवली तो अगर आप देखा जाए तो हार्दिक पांड्या की विराट कोहली से बेटर थी परफॉर्मेंस ओवरऑल। पर मतलब I think इमोशंस emotions went with Kohli. मतलब Kohli इमोशंस was all सब्जेक्टिव about emotions. हाँ, नहीं, मैन ऑफ द मैच तो डिज़र्व था। मतलब आप चाहे जितनी मर्ज़ी विकेट्स ले लो फर्स्ट इनिंग्स में, अगर अब मैच ही नहीं खत्म हो रहा, मैच जैसे हार्दिक पांड्या ने 40 रन्स मारे, पर मतलब मैच एंड तक खत्म शुरू से मतलब स्टेबिलिटी विराट कोहली ने दी, इनिंग्स बिल्ड उसने की और मतलब बाकी एंड में फिनिश भी उन्होंने ही किया, तो मतलब मेरे हिसाब से तो डिज़र्व्ड मैन ऑफ द मैच था। Okay, that is interesting. There are some good points. So let's go with that. That Kohli deserved to be the player of the match. हुँ, And as far as predicting the next few matches, it's difficult to say what will happen, which I also think. But radical idea of Pant and Kohli opening, I wouldn't mind trying it. अब अर्चित एक इंटरेस्टिंग चीज है. अब इसके बाद जब ये खत्म होगा एंड लेट्स प्रिज्यूम इंडिया रीचेस द फाइनल ऑन 13th,
पांच दिन बाद दे गो टू न्यूजीलैंड टू प्ले 350 ओवर मैचेस एंड 320 ओवर मैचेस. उसके 4 दिन बाद दे गो टू बांग्लादेश टू प्ले 2 टेस्ट मैचेस एंड 3 one-day मैचेस. So do you think the board was a little harsh in scheduling the Bangladesh series just 3 days after the New Zealand series ends on 30th? Because अब हाँ 30th को न्यूजीलैंड से निकलोगे, अब सीधा बांग्लादेश जाओगे, आपके पास टाइम मतलब नहीं होगा कि घर आओ, थोड़ा rejuvenate karo. So do you think by the time that happens they will also be fatigued, or do you think you will see once again Shikhar Dhawan leading the 50 over team in New Zealand and the Bangladesh series, when they can give a break to Kohli and Rohit and 3 or 4 players who may not even play the New Zealand 20 over series and straight away head to Bangladesh? Do you think हम्म that's a possibility that Pant, Rohit, Kohli, and 1 or 2 players they may not even play? Because I'm looking at the schedule and it's a very tight schedule. If हम्म India reach the finals, 5 days later they are in New Zealand, they are there for 12 days. 3 days later they are in Bangladesh. So I think that Bangladesh series was hastily scheduled. आपके हिसाब से क्या हम्म। आपको क्या लगता है? आप सही बात कर रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा हार्श है ये तो ट्रीटमेंट की, मतलब आप एक के बाद एक के बाद एक खेल ही जा रहे हो, मतलब उनको वर्कलोड मैनेजमेंट तो करनी जरूरी है। तो मतलब बांग्लादेश सीरीज के अंदर तो मेरे को लगता है कि बी टीम ही खेलेगी, मतलब जो बी टीम. मेन प्लेयर्स जो हैं वो रेस्ट पे ही रहेंगे अच्छा, बांग्लादेश सीरीज मुझे में। लगता है जो बी टीम की हम बात कर रहे हैं वो एक दिन ए टीम बन जाएगी. हाँ मतलब जो मतलब रिजर्व में प्लेयर्स थे वो मतलब मेन स्क्वाड के अंदर खेल लेंगे, जैसे अभी हॉकी हटा है, तो मेरे हिसाब से तो वैसे ही होएगा, क्योंकि नहीं कर सकते आप, इंसान ही है वो लोग भी, इतना कहाँ खेल लेंगे, उनको टाइम चाहिए अपना, इतना नहीं क्रिकेट खेलते हैं वो, रेस्ट Well, चाहिए। that we'll see. That is subject to if India reach on 13th. That is हाँ subject to on मतलब 13th. फिर भी मतलब मेरे हिसाब से तो कि आप इतना हाई, इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल टूर्नामेंट खेल लो, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल लो, वो भी कम स्ट्रेसफुल नहीं है, फिर उसके बाद आप बांग्लादेश चले जाओ, मतलब घर कब आओगे, तो मतलब वो तो पिछले जरूरी 15 दिन से यहीं पर है, घर तो कोई भी नहीं गया है. वही बट तो, घर कब जाओगे, यही तो है कि मतलब कब जाना है इन्होंने वापस, कितना ही खेल लेंगे, फैमिली टाइम भी जरूरी है। interesting factoid, Archit. Well, let's hope the Netherlands match is not one-sided. At least Netherlands says that we are not here for a joke, and I hope that on 27th both teams understand what is happening. And as I said, we need 2 more games to enter the semi-finals. And I'll go with your theory that India and New Zealand could be in the semi-finals. So let's go with that particular fact. And हम्म, are we expecting a surprise element? That is a possibility. That is कुछ a भी हो possibility. कुछ भी So हो सकता है। just to wrap it up, as we know, Rohit Sharma is playing his he was playing the first World Cup and he's playing this World Cup. Now, a lot of newspaper have said that this may be his last World Cup. Do you think this is his last 20 over World Cup, or do you think he has the energy left to maybe play one more 20 over World Cup, which is in 2024? Do you think he will be there? Anything हम्म, can happen in 2 years. होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर जैसे अभी चल रहे हैं मेरे हिसाब से तो खेलेंगे 2024 का वर्ल्ड कप भी। And do you think, and what do you think about next year's 2023 50 over World Cup? Do you think the home supremacy will continue? हम्म India can win the 2023 World Cup. हम्म, So this is the question for you: can India win the 20 over World Cup, the Test World Cup, and the 50 over World Cup in the next 12 months? All three together by the time 2023 comes to an end. मतलब मेरे हिसाब से तो इंडिया में कैपेबिलिटी तो है करने की, पर इतनी आगे देखना नहीं चाहिए अभी, इस वर्ल्ड कप पे डिपेंड करता है ना ये सब कुछ, तो मतलब वेल एनीथिंग, हाँ वो तो इस वर्ल्ड कप पर डिपेंड करता है, बट मैं एक वैसे एक वो हम्म फेंक रहा हूँ predictability, and it's a prediction, not a spoiler. So I'm predicting that India can win all three in the next 12 months. It depends on how much energy they have left by the time
this tournament ends and they play other tournaments. Well, Archit, it was great having you on the show, and I hope to see you more on the show next time.